आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन 105 पूछ रहे हैं, बेस्ट मेथड टू कंपेयर वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू पॉपुलेशन। बेस्ट मेथड टू कंपेयर, एक मिनट, टू कंपेयर वाइटल स्टैटिस्टिक्स of two population कैसे करते हैं? ऑप्शन 1 क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन 1 क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन 2 एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ऑप्शन 2 एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ऑप्शन 3 एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, ऑप्शन 4 मल्टीवेरिएट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। इस देखिए, बेस्ट मेथड टू कंपेयर वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट या मल्टीवेरिएट मोर्टेलिटी रेट। राइट आंसर इज एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट से हम लोग कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होती है? ऑप्शन 1 370 to 740 नैनोमीटर, 370 to 740 नैनोमीटर, ऑप्शन 2 740 to 1140 नैनोमीटर, 740 to 1140 नैनोमीटर, ऑप्शन 3 200 to 370 नैनोमीटर, 200 to 370 नैनोमीटर, ऑप्शन 4 200 to 370 नैनोमीटर। रिपीट ऑप्शन है 200 to 370 नैनोमीटर एंड राइट आंसर इज 370 to 740 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज फ्रॉम 370 to 740 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ एपिडेमिक टाइफस टेक प्लेस बाय लाउस? हाउ एपिडेमिक टाइफस transmitted by louse? Transmitted by louse. Option 1 louse bite, by louse bite, option 2 eating infected material, material, option 3 crushing louse on body, option 4 all of the above. How epidemic typhus transmitted by louse bite, eating infected material, crushing louse on body, या all of the above? The right answer is crushing louse on body, by crushing louse on body. क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, नॉट ट्रांसमिटेड बाय माइट, तो पूछ रहे हैं माइट ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन 1 स्केबीज, ऑप्शन 1 स्केबीज, ऑप्शन 2 स्क्रब टाइफस, ऑप्शन 2 स्क्रब टाइफस, ऑप्शन 3 रिकेट्सियल पॉक्स, ऑप्शन 3 रिकेट्सियल पॉक्स, ऑप्शन 4 कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज, ऑप्शन 4 कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज। फिर से देखिए, माइट ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट स्केबी, स्क्रब टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स, कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज। राइट आंसर इज कायासानुर फॉरेस्ट डिजीज। इसको माइट ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन स्केबी, स्क्रब टाइफस और रिकेट्सियल पॉक्स को माइट ट्रांसमिट किया करती है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, फीचर्स ऑफ RNTCP इज
feature of RNTCP is option 1 examination of 3 sputum sample. Examination of 3 sputum sample. Option 2 first sample is early morning sample. First sample is early morning sample. Option 3 passive case finding. Passive case finding. Option 4 case finding tool is sputum culture. Case finding by sputum culture. फिर से देखिए feature of RNTCP is examination of 3 sputum sample. First sample is early morning sample. Passive case finding या case finding by sputum culture. The right answer is passive case finding. The right answer is passive case finding. Question number 110 देखेंगे. Question number 110 which is not a motility indicator. Which is not a mortality indicator. ठीक है ना. Which one is not a mortality indicator? Option 1 year of potential life lost. Year of potential life lost. Option 2 life expectancy. Life expectancy. Option 3 IMR. IMR. Option 4 prevalence. Prevalence. फिर से देखिए which is not a mortality indicator. Year of potential loss, life lost, life expectancy, IMR, prevalence. And the right answer is prevalence. The right answer is prevalence. Question number 111 देख रहे हैं. Question number 111 complete family size is indicated by. Complete family size indicated by. Indicated by. Option 1 birth rate. Option 1 birth rate. Option 2 death rate. Option 2 death rate. Option 3 total fertility rate. Option 3 total fertility rate. Option 4 age specific fertility rate. Option 4 age specific fertility rate. फिर से देखिए complete family size indicated by birth rate, death rate, total fertility rate, age specific fertility rate. The right answer is total fertility rate. By total fertility rate. क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 112 पूछ रहे हैं ट्रू अबाउट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. ट्रू अबाउट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 क्या है. ऑप्शन 1 रिड्यूस IMR टू लेस देन 20. रिड्यूस IMR टू लेस देन 20. Option 2 reduce MMR to less than 50. Reduce MMR to less than 50. Option 3 100% immunization. 100% immunization. Option 4 100% institutional delivery. 100% institutional delivery. Is true about national population policy 2000. Decrease IMR to less than 20. Decrease MMR to less than 50. 100% immunization and 100% institutional delivery. The right answer is 100% immunization. 100% immunization. Question number 113 देखेंगे. यहाँ पूछा है study useful for rare disease. Study used for rare disease. Study used for rare disease. Option 1 cohort study. Option 1 cohort study.
Option 2, case control study. Option 2, case control study. Option 3, cross-sectional study. Option 3, cross-sectional study. Option 4, field trial. Option 4, field trial. Study used for rare disease. Cohort study, case control study, cross-sectional study, field trial. Right answer is case control study. Right answer is case control study. Question number 114 देखेंगे. Question number 114. True about longitudinal studies. True about longitudinal study. True about longitudinal study. Option 1, find natural history of disease. Find natural history of disease. Option 2, find incidence rate. Find incidence rate. Option 3, identify risk factor. Identify risk factor. Option 4, all are correct. Option 4, all are correct. True about longitudinal study. Find natural history of disease. Find incidence rate. Identify risk factor. Yeah, all of the above. The answer is all of the above. All of the above. Question number 115 देख रहे हैं. Question number 115 ये पूछ रहे हैं कि not true. Iron plus initiative is example of. Iron plus initiative is example of. Option 1, primordial prevention. Primordial prevention. Option 2, primary prevention. Primary prevention. Option 3, secondary prevention. Secondary prevention. Option 4, tertiary prevention. Tertiary prevention. Iron plus initiative is example of primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. The answer is primary prevention. Primary prevention. Question number 116 देख रहे हैं. First step to in control of cholera epidemic. First step in control of cholera epidemic. Cholera epidemic. Option 1, ORS therapy. ORS therapy. Option 2, provision of safe water. Provision of safe water. Option 3, verification of diagnosis. Verification of diagnosis. Option 4, chemoprophylaxis. Chemoprophylaxis. This is the first step in control of cholera epidemic. ORS therapy, provision of safe water, verification of diagnosis, chemoprophylaxis. The answer is verification of diagnosis. Verification of diagnosis. Question number 117 देखेंगे. Not true about SSPE. True about SSPE are all except. All except. Option 1, rare complication. Rare complication. Option 2, late complication. Late complication. Option 3, antibiotics are formed in CSM. Antibodies. Antibodies formed in CSF. Option 4, virus isolation from CSF is diagnostic. Virus isolation from CSF is diagnostic. Is they get true about SSP are all except. It is a rare complication. It is a late complication. Antibody formed in CSF. Your virus isolation from CSF is diagnostic. And the right answer is virus isolation from CSF is not diagnostic. Virus isolation from CSF is not diagnostic. बाकी SSP के बारे में सही बात है क्या है? Rare complication, late complication, antibody formed in the CSF. आज के लिए इतना ही. Thank you.